The sun was just beginning to warm the crisp morning air on this day, the 16th of March, 2026. Below, a vast green carpet of forest stretched as far as the eye could see. The trees stood silent and still, their leaves holding the morning dew like tiny jewels. A gentle mist drifted between the trunks, making the woods seem like a place from an old storybook, full of secrets and quiet mysteries. It was a world waking up slowly, where every rustle of a leaf and every snap of a twig told a story. The air was clean and carried the scent of damp earth and pine needles. It was a peaceful scene, but it was a peace that held its breath. High above this tranquil world, the sky was a canvas of pale blue and soft, feathery clouds. It was an endless expanse, a kingdom of its own. Here, the silence was different. It was not the quiet of the forest floor, but the profound silence of open space, broken only by the whisper of the wind. This was the domain of the falcon. From this vantage point, the sprawling forest below looked like a detailed map. Every clearing, every winding river, and every tall tree was a landmark. The world below was full of life, but up here, there was only solitude and the patient hum of the wind currents. This falcon, a magnificent peregrine, was a part of this sky. He was not merely visiting, he owned this patch of blue. His name was Sky Dancer, though no human had ever called him that. He circled lazily, a dark speck against the bright morning light. He wasn't just enjoying the view, he was on duty. His presence was a silent promise of action, a hint of the drama that was about to unfold in this otherwise calm landscape. The forest below might seem serene, but it was a stage, and the falcon was its most skilled and watchful actor, waiting for his cue. The boundary between the sky and the forest was where the real story lived. It was a line drawn between two different worlds. One was the world of shadows, hiding places, and cautious movements on the ground. The other was the world of absolute freedom, of clear sight and swift, decisive action. Sky Dancer existed on this line, a guardian and a hunter, a creature of both the calm and the storm. His silhouette against the clouds was a symbol of the wild, untamed spirit of nature itself, a reminder that even in the most peaceful moments, life is a constant, thrilling dance of survival. Sky Dancer rode the invisible currents of the air, his wings barely moving. He was a master of efficiency, using the wind's own power to hold his position. From his incredible height, the world below was a tapestry of greens and browns. To a human eye, it would be a blur, a beautiful but indistinct landscape. But Sky Dancer's eyes were not human. They were nature's most perfect binoculars, capable of seeing with a clarity that was almost magical. He could spot the slightest flicker of movement, a single feather ruffling in the wrong way from more than a mile away. His gaze was sharp, focused, and incredibly patient. He scanned the canopy methodically, his head turning in small, precise movements. He was not just looking, he was reading the forest. He saw a squirrel chasing another up the trunk of an old oak tree. He noticed a deer and its fawn drinking from a stream, their ears twitching at every sound. He saw the patterns of light and shadow, and he knew where prey was most likely to be found. Every detail was registered, analyzed, and stored. This was not a random search. It was a calculated, deliberate patrol, a task he had performed every day of his adult life. His mind was as sharp as his vision. This constant vigilance was the key to his existence. The sky offered freedom, but it also offered no place to hide. His strength was his sight, his ability to see danger and opportunity long before they saw him. He was a solitary figure in the vast emptiness, a dot of intense concentration. The world below was teeming with life, much of it hidden, but his eyes could pierce through the camouflage. He was looking for one thing: a mistake, a moment of carelessness from a creature below, a pigeon straying too far from the flock, a field mouse venturing too far from its burrow. Patience was his greatest ally. The sun climbed higher, and the forest grew more active. The sounds of birdsong drifted up to him, a chorus that he understood better than any musician. He could distinguish the warning call of a jay from the cheerful chirp of a sparrow.
He listened with his eyes, interpreting the visual signals of the forest's inhabitants. His focus was absolute, his body a perfectly still vessel of potential energy. He was a living paradox, completely at rest, yet ready to explode into motion at a moment's notice. The hunter was waiting, and his eyes held the fate of some unsuspecting creature below. Suddenly, he saw it. A plump wood pigeon, separated from its group, was pecking at seeds in a small clearing near the edge of the forest. It was a fatal error. The pigeon felt safe, shielded by the nearby trees, but it had not looked up. For Skydancer, this was the moment he had been waiting for. The opportunity was clear, the target isolated. In an instant, his entire posture changed. The lazy circling stopped. His body, which had been relaxed and gliding, became a taut, aerodynamic weapon. He was no longer a part of the gentle sky. He was its judgment. He tilted his wings slightly, angling his body downwards. He folded them in, not completely, but just enough to transform himself into a teardrop shape. Gravity, his old friend, began to pull him towards the earth. He was not just falling, he was diving. This was the famous falcon's stoop. A dive so fast it was faster than any other animal on the planet. The wind began to roar past him, a sound that would terrify any other creature, but to him, it was the sound of purpose. The world below rushed up to meet him at an incredible speed. The pigeon was still oblivious. It hopped, pecked, and ruffled its feathers, entirely unaware of the silent missile descending from the heavens. Skydancer's focus was now narrowed to a single point, his target. Everything else, the trees, the sky, the ground, became a blur. His eyes, protected by a special third eyelid, remained fixed on the pigeon. He adjusted his trajectory with the slightest twitch of a wing feather, making tiny corrections to account for the wind and the pigeon's small movements. He was a living arrow, guided by an ancient instinct. In the final seconds, he was a blur of motion. The air screamed past him as he reached his maximum velocity, well over 200 miles per hour. Just before impact, he balled his feet into hard fists. He did not intend to grab the pigeon, but to strike it. The blow was delivered with shocking force and precision. It was over in a fraction of a second. A puff of feathers exploded into the air, and the pigeon fell, its life extinguished instantly. The plunge from heaven was complete. The hunter had claimed his prize with a display of breathtaking speed and power. Victory was sweet, but the forest floor was a dangerous place. Skydancer landed gracefully beside his catch, his heart still pounding from the thrill of the dive. He immediately began to scan his surroundings, his head swiveling, his sharp eyes alert. The hunt was only half the battle. Now, he had to secure his meal. The clearing that had seemed so peaceful moments ago now felt full of threats. The scent of fresh blood would travel on the breeze, and he was not the only hunter in these woods. He was exposed and vulnerable on the ground. He did not have to wait long. From the corner of his eye, he caught a movement in the branches of a nearby pine tree. A large goshawk, a powerful and aggressive forest specialist, had been watching. The goshawk was a bully, a pirate of the treetops, and it saw an easy meal. With a harsh cry, it launched itself from its perch, its broad wings designed for short, powerful bursts of speed through the dense trees. It was coming for Skydancer's pigeon, and it was not going to ask politely. The challenge had been issued. Skydancer knew he could not fight the larger, heavier goshawk on its own terms, especially not here in the confined space near the trees. A direct confrontation would be foolish. His advantage was in the open sky, in his speed and agility. He quickly grabbed his prize, the pigeon surprisingly heavy, and with a powerful thrust of his legs and wings, he launched himself back into the air. He needed height, and he needed it now. The goshawk was close behind, its talons ready to snatch the food away. The chase was on. It was a different kind of flight from the stoop. This was a desperate, twisting battle. The goshawk was surprisingly fast and agile among the trees, trying to force Skydancer into a mistake. Skydancer climbed steeply, his wings beating furiously, the weight of the pigeon making it a hard struggle.
He dodged and weaved, using his superior aerial skills to stay just ahead of his rival. The goshawk screeched in frustration, a sound of raw aggression that echoed through the clearing. This was not about hunger alone. It was about territory and pride. Skydancer knew he had to outthink his opponent. Brute force was not the answer. He continued to climb, pulling the goshawk higher and higher, away from the tangled forest where it had the advantage. The higher they went, the more the balance of power shifted in his favor. The open sky was his arena. The goshawk, built for the forest, began to labor in the thinner air. It was a powerful bird, but it lacked the sheer endurance for a prolonged vertical chase. Skydancer was leading it into his world, a world of endless space and tactical flight. Once he had gained enough altitude, Skydancer performed a brilliant maneuver. He suddenly folded his wings and dropped a few feet, as if he had lost his grip on the pigeon. For a split second, the goshawk surged forward, thinking its moment had come. But it was a trick. As the goshawk overshot him, Skydancer opened his wings again, caught an updraft, and veered sharply in a different direction. He had used the goshawk's own aggression and momentum against it, creating the separation he needed. The sky was a chessboard, and he had just made a clever move. Now, with a clear gap between them, Skydancer put on a burst of speed, flying not upwards, but horizontally, towards the high cliffs that marked the edge of his territory. The goshawk, momentarily confused and now further behind, let out one last angry cry and reluctantly turned back towards the cover of the forest. It knew it had been outflown. The prize was lost. Skydancer had won the battle not with strength, but with intelligence and a superior understanding of the air. He had protected his hard-earned meal through sheer cunning. The journey back was still a struggle. The pigeon was a heavy burden, and his muscles ached from the chase. But the sight of the familiar cliffs in the distance gave him renewed strength. He was flying for more than just himself. He was a provider. This meal was not just for him, it was for his family, waiting patiently for his return. The thought of his hungry chicks spurred him on, giving him the energy to cover the last mile. The wind was with him now, as if rewarding him for his bravery and cleverness on the difficult journey home. उसका घर पेड़ों में टहनियों का घोंसला नहीं था, बल्कि एक ऊंची, दुर्गम चट्टान की धार पर बना एक छोटा सा गड्ढा था। ये एक किला था, सुरक्षा के लिए चुना गया, जहां से पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती थी। कोई भी जमीनी शिकारी वहां कभी नहीं पहुंच सकता था। उस धार को चट्टान की ओट ने सबसे तेज हवा और बारिश से बचा रखा था। वहीं सूरज की गर्मी में उसके 2 बच्चे बैठे थे। वे मुलायम, सफेद, रुई जैसे पंखों में लिपटे हुए थे। उनकी आंखें बड़ी और गहरी थीं, और उनकी चोंच में पहले से ही भविष्य के शिकारी की धार दिख रही थी। वे नाजुकता और संभावना दोनों का मिश्रण थे। जब स्काईडांसर पास आया तो धार पर उत्साहित चहचहाहट गूंज उठी। बच्चों ने उसे आते देख लिया था। वे गड्ढे के किनारे तक आ गए। उनके छोटे छोटे शरीर उत्सुकता से कांप रहे थे। उनकी माँ, जो थोड़ी बड़ी और उतनी ही शानदार बाज थी, उनके ऊपर पहरा दे रही थी। उसने स्काईडांसर का स्वागत एक नरम पुकार के साथ किया, जो पहचान और राहत का संकेत थी। वह धीरे से धार पर उतरा और उनके सामने कबूतर गिरा दिया। संघर्ष समाप्त हो गया था। पालनहार लौट आया था। धार पर माहौल गर्मजोशी, सुरक्षा और गहरे पारिवारिक जुड़ाव का था। वह देखता रहा जैसे उसकी साथी बच्चों के लिए खाना तैयार करने लगी। उसने अपने अनुभव से चोंच से पंख नोचकर छोटे छोटे मांस के टुकड़े बनाए। बच्चे जगह पाने के लिए आपस में धक्का मुक्की करने लगे। उनके मुंह खुले थे और वे जोर जोर से चहचहा रहे थे। वे भूख की शुद्ध कच्ची अभिव्यक्ति थे। माँ ने उन्हें धैर्य से खिलाया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि हर एक को हिस्सा मिले। स्काईडांसर पीछे खड़ा रहा। उसका काम फिलहाल पूरा हो गया था। वह अपने पंख संवारने लगा, थका हुआ लेकिन गहरे संतोष से भरा हुआ। ये छोटी शोरगुल वाली जीवन की गोलाई इस दूर दराज चट्टान की धार पर उसके हर प्रयास का कारण थी। हर शिकार के पीछे की असली वजह थी। सूरज ढलने लगा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंगते हुए। हवा भी अब हल्की हो गई थी। धार पर बच्चे अब तृप्त और शांत थे, एक दूसरे से सटकर गर्मी पा रहे थे। उनकी माँ,
उनके ऊपर बैठ गई, अपने शरीर से उन्हें एक जीवित कंबल की तरह ढक लिया। स्काई डांसर पहरे पर खड़ा रहा। उसका साया ढलती रोशनी में एक गहरे, गर्वित आकार जैसा दिख रहा था। यही उसका राज्य था, लेकिन यही उसकी शरण स्थली भी थी। ये जगह जंगलीपन और गहरी कोमलता दोनों का मेल थी। एक ऐसा घर जो पत्थर में तराशा गया था और जिसे वफादारी और अपने परिवार की रक्षा की प्रवृत्ति ने जोड़े रखा था। स्काई डांसर हमेशा से आसमान का मालिक नहीं था। उसे अपने ही बचपन के दिन याद थे, जब वह इसी तरह की धार पर एक भद्दा, रुई जैसा बच्चा था। उसे याद था पहली बार किनारे पर खड़े होने का डर और रोमांच, जब हवा उसके नए पंखों को खींच रही थी। उसकी पहली उड़ान कोई सुंदर उड़ान नहीं थी, बल्कि एक घबराई हुई, लड़खड़ाती हुई गिरावट थी। उसने अपने पंख अजीब तरह से फड़फड़ाए, बेतहाशा कोशिश की कि जो उसके माता पिता ने सिखाया था उसे याद कर सके। उसने जैसे तैसे हवा पकड़ ली थी। ठीक चट्टानों से टकराने से पहले उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ये डर और साहस का सबक था। शिकार सीखना तो और भी कठिन था। उसके पिता उसे जिंदा लेकिन घायल शिकार लाकर देते थे ताकि वह अभ्यास कर सके। उसे अपनी हिचक और घोंसले के भीतर फड़फड़ाते गौरैया को पकड़ने की नाकाम कोशिशें याद हैं। वह ज्यादातर बार चूक जाता था। उसकी पहली एकल शिकार यात्राएं असफल रहीं। वह कभी जल्दी कभी देर से गोता लगाता, गति और दूरी का अंदाजा नहीं लगा पाता। कई बार वह भूखा और मायूस लौटता, लेकिन हर असफलता में वह कुछ नया सीखता। उसने हवा के बारे में सीखा, उस तरीके के बारे में सीखा जिससे एक पक्षी बचने के लिए मुड़ता है, और धैर्य के महत्व के बारे में सीखा। उसे एक खास दर्दनाक गिरावट याद है। वह एक स्विफ्ट के पीछे था जो बहुत मुश्किल शिकार होता है, और अपनी युवावस्था की उतावली में वह उसे चट्टान के बहुत पास ले गया। उसने अपना पंख चट्टान से टकरा दिया, जिससे वह नीचे की ओर घूमता हुआ गिर पड़ा। वह जोर से गिरा, चोटिल और डरा हुआ। 2 दिन तक वह ठीक से उड़ नहीं पाया और एक दरार में छुपा रहा, भूखा और डरा हुआ। उस अनुभव ने उसे सबसे कीमती सबक दिया, अपनी सीमाओं का सम्मान और उतावलेपन के खतरों की समझ। इसने उसे विनम्रता सिखाई, जो लंबे समय तक जीवित रहने के लिए जरूरी है। अब अपने ही बच्चों को देखते हुए उसने वही यात्रा फिर से शुरू होते देखी। जल्दी ही वे भी अपनी पहली उड़ान में गिरेंगे। वे अपनी असफल शिकार यात्राएं और बाल बाल बचाव खुद महसूस करेंगे। वह और उसकी साथी उन्हें मार्गदर्शन देंगे, सिखाएंगे और अपनी पूरी कोशिश से उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन अंत में उन्हें हवा के सबक खुद ही सीखने होंगे। उन्हें उड़ना सीखने के लिए गिरना ही पड़ेगा। उन्हें सफल होने के लिए असफल होना ही पड़ेगा। यही बाज के जीवन का प्राचीन अबाध चक्र है। एक जीवन जो लगातार सीखने, लचीलापन और विकास से भरा है। बाज का जीवन साहस की ताकत का प्रमाण है। पहली बार ऊंची चट्टान से खाली हवा में कूदने के लिए साहस चाहिए। जमीन की ओर जबरदस्त रफ्तार से गोता लगाने के लिए, अपने कौशल और समय पर भरोसा करने के लिए साहस चाहिए। अपने से बड़े प्रतिद्वंद्वी का सामना करने और अपनी चीजों की रक्षा करने के लिए साहस चाहिए। स्काई डांसर हर दिन इस साहस को जीता था। ये डर की गैर मौजूदगी नहीं थी, बल्कि उस पर काबू पाने की कला थी। वह हमेशा किनारे पर रहता था, एक ऐसे संसार में जहां हर चीज दांव पर थी, और वह इसे एक मजबूत और अडिग आत्मा के साथ करता था। धैर्य इसका दूसरा पहलू है। बाज का जीवन सिर्फ तेज उड़ानों और रोमांचक घटनाओं का नहीं होता। ज्यादातर समय इंतजार में बीतता है। आसमान में घंटों घूमना, देखना, ताकना और ऊर्जा बचाना। स्काई डांसर शिकार की लय को समझता था। उसे पता था जल्दबाजी में गलती होती है और मेहनत बेकार जाती है। वह सही मौके, सही अवसर का इंतजार कर सकता था, बिना बेचैन हुए। यही गहरा धैर्य उसे कारगर बनाता था, ताकि वह सिर्फ तभी वार करे जब सफलता की संभावना सबसे ज्यादा हो। ये एक शांत भीतरी ताकत थी, जो उसकी शारीरिक शक्ति जितनी ही महत्वपूर्ण थी। और फिर है बुद्धिमत्ता, जो कठिनाइयों से उपजती है। हर घाव, हर नजदीकी हादसा, हर तूफान ने स्काई डांसर को कुछ न कुछ सिखाया था। उसे पता था कौन सी हवा में उड़ना है और किससे बचना है, कौन सा शिकार मेहनत के लायक है और कौन सा बहुत जोखिम भरा है। वह सोचकर काम करता था, सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता था। जब उसने गॉशहॉक का सामना किया तो उसने अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि अपनी समझदारी पर भरोसा किया। यही अनुकूलन की क्षमता,
समस्याएं हल करने की कला और कठिन समय में सही निर्णय लेने की योग्यता एक जीवित रहने वाले को शिकार बनने से अलग करती है। यही बुद्धिमत्ता राजा को उसके सिंहासन पर बनाए रखती है। ये गुण, साहस, धैर्य और बुद्धिमत्ता सिर्फ बाज के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए सबक है जो इन्हें देखता है। ये हमें सिखाते हैं कि असली ताकत साहस और संयम का मेल है। ये सही मौके के इंतजार की अहमियत और अपनी असफलताओं से सीखने की जरूरत दिखाते हैं। बाज का जीवन चुनौतियों का सामना करने की कहानी है जो लचीलापन और समझदारी से लड़ी जाती है। ये हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपनी मुश्किलों का सामना उसी भावना से करें, अपने कामों में साहसी, अपने प्रयासों में धैर्यवान और अपने फैसलों में समझदार रहें, चाहे हमारे सामने कैसी भी चुनौती हो। प्रकृति की भव्य बुनावट में हर जीव का अपना एक स्थान है। बाज का स्थान है आसमान का सर्वोच्च शिकारी, खुले आसमान का राजा। स्काई डांसर सिर्फ एक पक्षी नहीं था, वह अपने वातावरण में एक महत्वपूर्ण शक्ति था। कबूतरों और मैना जैसे आम और अधिक संख्या वाले पक्षियों का शिकार करके वह उनकी आबादी को संतुलित रखता था। वह एक प्राकृतिक नियंत्रक था, एक पंखों वाला रक्षक जो पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखता था। उसकी मौजूदगी से नीचे का जंगल स्वस्थ और विविध बना रहता था। वह कोई खलनायक नहीं था, बल्कि पूरे तंत्र का जरूरी हिस्सा था। उसका शासन डर से नहीं, बल्कि महारत से था। उसने कभी डरा कर राज नहीं किया, बल्कि अपनी बेजोड़ क्षमता से। उसकी शानदार गोताखोरी और अद्भुत दृष्टि विकास की शक्ति का उत्सव थी। एक ऐसा जीव जो अपने संसार के लिए अद्भुत रूप से अनुकूलित था। उसे शिकार करते देखना प्रकृति को उसकी सबसे कच्ची, प्रभावशाली और विस्मयकारी अवस्था में देखना था। वह जंगलीपन का प्रतीक था, एक याद दिलाने वाला कि दुनिया ताकत, कौशल और प्रवृत्ति के सिद्धांतों पर चलती है। वह नीचे की दुनिया को हमेशा सतर्क रखता ताकि जीवन तेज और चौकस बना रहे। जैसे जैसे सांझ धरती पर उतरती, स्काई डांसर अपनी ऊंची धार पर खड़ा था, एक मौन सम्राट अपने राज्य का निरीक्षण करता हुआ। नीचे का जंगल अंधेरे में डूब रहा था और गहरे नीले आसमान में पहली तारे चमकने लगे थे। उसने एक और दिन पार कर लिया था। उसने शिकार किया, मुकाबला किया, अपने परिवार के लिए भोजन जुटाया और लौट आया। उसका जीवन जोखिम और इनाम, अकेलेपन और जुड़ाव का चक्र था। वह विशाल आसमान में अकेला शिकारी था, लेकिन अपने पत्थर के किले में समर्पित पिता और साथी भी था। बाज प्राकृतिक पूर्णता की पराकाष्ठा का प्रतीक है। वह अपने क्षेत्र का स्वामी है, अद्भुत सुंदरता और घातक अनुग्रह का जीवित उदाहरण। वह स्वतंत्रता, एकाग्रता और उस जंगली भावना का प्रतीक है जो प्रकृति की आत्मा में बसी है। स्काई डांसर, आसमान का राजा, कल फिर यहीं होगा, हवा में तैरता हुआ, उसकी तेज नजरें नीचे की दुनिया को देखती हुई। वह था और हमेशा रहेगा आसमान का रहस्यमयी शिकारी, प्रकृति की शक्ति और भव्यता का सजीव रूप, जो हमेशा जीवन और मृत्यु के तराजू को संतुलित करता रहेगा इस महान जंगल में।